here we are at the end of our electrical double layer models, and that model is the last one and the third one model, which is known as a Stern model. Which model? Stern model. To explain this Stern model, now the word itself it indicates, or I can say the heading itself it indicates you. The heading itself it indicates you what this model has been explained by the scientist Stern. By the scientist Stern, obviously. तो अब ये जो कुछ भी साइंटिस्ट है, स्टर्न साइंटिस्ट है, इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया. इन्होंने हमें क्या एक्सप्लेन किया? ये मॉडल एक्सप्लेन किया. बट अब यह जो कुछ भी मॉडल है, तो ये मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए, कौन सा मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए? स्टर्न मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजें कंसिडर करनी पड़ी. क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ी? दो चीजें कंसिडर करनी पड़ी. क्या थी वो? दिस इज द थर्ड वन मॉडल. विच मॉडल इट इज? स्टर्न मॉडल. एंड वॉट एवर दिस मॉडल इज दियर, this model is a combination of Helmholtz model and Perrin model. Sorry, Helmholtz model and Coy-Chapman model. Means what? Means simply, अगदी सोप्या शब्दात आणि कमी वेळेत सांगते. स्टर्न मॉडेल इज अ मॉडेल विच इज द कॉम्बिनेशन और विच इज डिपेंडेंट ऑन टू द बेसिस ऑफ हेल्मोल्ट्ज मॉडेल and Goy-Chapman model. Helmholtz model and Goy-Chapman model. As like in a Helmholtz model, we have one layer, or we can say that it has one electrode here and another layer is here and another diffused layer is here, like Goy-Chapman model. Means what? Helmholtz model में जैसे हमने लिए थे, एक इलेक्ट्रोड है, उसके बाजू में काउंटर आयन रिजिड लेवल पे है वैसे, और दूसरा है डिफ्यूज्ड आयन्स, जो कुछ भी है वो ऐसे सिचुएट होते हैं. तो आपका जो कुछ भी नेचर ऑफ ग्राफ होगा, that nature of graph will look toward, it may look towards like this. How? Because see, if you are having like Helmholtz model, those are rigid, means उनकी जो कुछ भी probability है potential difference की वो ज्यादा होती है. बट बाद में क्या हो रहा है? डिफ्यूज्ड आयन्स बढ़ रहे हैं, तो बाद में क्या होगा? आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम 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 हो जाएगा. यस और नो? बट पहले लीनियरली, पहले कैसे होगा? वो ज्यादा होगा. Okay, and then after whatever this your Stern model is there, this your Stern model is explaining you the information. This is Stern model is explaining you the information which is regarding electrical double layer, which is regarding a electrical double layer. And what type of electrical double layer this is showing you? See, this is Stern layer is explaining you about inner region. This is nothing but the about inner region. Inner region means what? Now this layer is having its this is due to the chemical interaction. How it is due to the chemical reaction? See guys, whatever your cations are there, these cations are obviously adsorbed by your negative surface ions, means negatively charged ions, and whatever the counter ions are there for your these cations are there, those will be the negative, those will be the negative. Means क्या? अगर से आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा तो उसका काउंटर आयन कौन सा होगा? नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा. दिस इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टर्न लेयर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टर्न लेयर. एंड ये हो गया अब स्टर्न लेयर. हाँ, मैंने ये क्या किसकी बातें बोली है? स्टर्न लेयर की. कंफ्यूज मत हो सब लोग. हाँ, तो अब ये हो गया बात स्टर्न लेयर की. अब इसके बाद में क्या पढ़ते हैं हम? स्टर्न मॉडल. अभी अभी जैसे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि जो कुछ भी ये स्टर्न हमारा मॉडल है, ये स्टर्न मॉडल इज शोविंग अस, दिस स्टर्न मॉडल इज शोविंग अस, wait, I'm loading this slide, is showing us the combination of Helmholtz model and Goy-Chapman model. And now whatever this model is there, this model is explaining you, this model is explaining you simply the eliminating, it will
It will means the Stern model or Stern layer or can explain on the basis of its theory, and that is nothing but it is eliminating the point charge approximation of diffused double layer theory, which we have explained in Goy-Chapman model. Yes or no? अभी अभी मैंने बोला था diffused double layer. And so this we have learned in our Goy-Chapman model. And now whatever this Goy-Chapman model is there, it do not this Goy-Chapman model. Let me continue with the point. This Stern model. In this Stern model, Goy-Chapman assumes that there is no physical limits for the ions in their approach to the surface, which is not true. Means क्या? अब ये जो Goy-Chapman model था, ये जो Goy-Chapman model था, इसमें हमने पढ़ा था, देखो, whatever this Goy-Chapman model is there, this Goy-Chapman model was assuming that there is no physical limit for the ions to approach the surface, which is not true. Means what? अब ये जो कुछ भी आपका लेयर होता है, इन लेयर्स के बीच में जो कुछ भी डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ज्यादा होता है, और वो जो आपके काउंटर आयंस होते हैं उनमें नॉन रिजिड नेचर हमने कंसीडर किया था, बट वो एग्जैक्टली कंसिडरेबल है क्या, एग्जैक्टली राइट है क्या, नहीं। तो फिर अब ये जो कुछ भी आयंस होते हैं Goy-Chapman मॉडल में, ये जो कुछ भी आयंस होते हैं उनका जो कुछ भी डिस्टेंस होता है वो ज्यादा, और ये डिफ्यूज्ड आयंस भी होते हैं वहां पर प्रेजेंट। तो अब ये जो कुछ भी आयंस होंगे आपके, ये जो कुछ भी आयंस होंगे आपके, तो वो आयंस आपके एग्जैक्टली सरफेस पे होंगे क्या, नहीं, बट कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पर वो आयंस होंगे, टू विच वी कैन से दैट इज एज those will be at specific distance, those will be at specific distance from your radius of your relative ion. And now whatever this Stern layer is there or Stern model is there, to this to for the explanation of this Stern theory, you are using the dividing you are using this your Goy-Chapman model and Helmholtz model by the solution by the your solution ratio, or by your solution charge into the two contribution. Means what? The second thing which you are learning into this Stern theory is there, that is nothing but in dividing this solution charge into the two contributions. Means what? As I told you na just now कि is Stern model explain करने के लिए हम Helmholtz layer और Stern layer sorry Goy-Chapman layer दोनों की मदद लेते हैं, वही वही है ये पॉइंट। हाँ, अब इसके बाद में अब ये जो कुछ भी Stern model है, तो this Stern model is having OHP and IHP. I have told you already, OHP means outer Helmholtz layer, and yeah, and IHP means inner Helmholtz perine layer. So ये जो कुछ भी अब layers होते हैं, तो these layers are having their specific charges, and as you know very well from your what Helmholtz layer, we have shown their Q as a charge, and whatever these charges are there, these charges can be shown by Q notation Q. So अगर आपको Q यस मतलब स्टर्न का Q निकालना है स्टर्न मॉडल का, तो आप लोग किस किस को कौन कौन से Qs को कंसिडर करोगे, क्योंकि स्टर्न मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज चार्जेस प्लस हुज चार्जेस Goy-Chapman मॉडल्स के जो कुछ भी चार्जेस होंगे, क्योंकि स्टर्न मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Goy-Chapman मॉडल एंड हेल्महोल्ट्ज मॉडल, दैट इज व्हाई। एंड नाउ वी कैन हैव these your charges, these charges you can separate, you can tell them out, and whatever these charges are there, these charges, wait a minute, I'm loading next slide to tell you, to explain you the points which are related with Stern model. Mm. So
ये जो कुछ भी अब मॉडल्स होंगे, दिस मॉडल्स यू कैन शो बाय फाई, यू कैन शो बाय फाई। एंड ये जो कुछ भी अब सी सी कंफ्यूज मत हो, हाँ। चार्जेस शो करते हैं क्यू से, और जो कुछ भी फाई है तो वो फाई इज नथिंग बट द पोटेंशियल ड्रॉप, potential of your those ions drops. So those can be shown by this phi, no, phi equation. Those can be shown by this phi equation of your Helmholtz model and of your obviously Goy-Chapman model. So पहली टर्म होगी वो किससे रिलेटेड होगी और दूसरी टर्म होगी वो किससे रिलेटेड होगी, तो obviously these things which are shown by phi, these are related with your inner potential of your this. See, Stern model is, or Stern layer is completely dependent onto the inner potential of your metal and those ions ना. So अब ये जो कुछ भी phi है values है, ये phi values are related with Helmholtz model and your Guy-Chapman model. But what is exactly this phi value? This exact we are here to explain your what is exactly your phi value. So phi value is nothing but the potential of your droplets, two drops you can say. So ये जो कुछ भी potential होगा वो तो potential फिर कौन कैसे कैसे बताओगे आप? See, inner potential and potential of your bulk solution. So potential of your bulk, you can zoom out your slide and you can check it out, huh? Now I'm not going to zoom you and to tell you, CC this is phi I, and this is CC this is phi in phi of bulk model, because this is not expected in this model. Now this all things I'm telling you in much details, it is not expected to tell you in this much detail, huh? But you should be clear with which you are learning, that is why only I'm telling you. See, now अब ये जो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंसेस के जो कुछ भी कॉम्बिनेशंस होंगे आपके हेल्महोल्ट्ज मॉडल के और पेरिन मॉडल, सॉरी हेल्महोल्ट्ज और गॉय चैपमैन मॉडल के, उनको आप कंबाइन करोगे, और ये जो कुछ भी कंबाइन करने के बाद में फाइनली आप जो कुछ भी आपका ये गॉय चैपमैन मॉडल और हेल्महोल्ट्ज मॉडल का कॉम्बिनेशन देते हो, वो सिंपल से क्या बोलते हैं हम इक्वेशन में देने के लिए ये हमारे पास में है इक्वेशन. एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन? It is nothing but 1 by c is equals to 1 by ch. H stands for Helmholtz model, and plus 1 by cg means Goy-Chapman model. And what is mean by this c is nothing but the capacity. C is nothing but the capacity. किसकी कैपेसिटी? तो आपकी ये जो कुछ भी पोटेंशियल चार्जेस होते हैं उनके जो कुछ भी डिफरेंसेस, फाइव वाले डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में, जो कुछ भी उनकी कैपेसिटी होगी टोटल, उनके जो कुछ भी टोटल कैपेसिटीज होंगे उनके. बट सी, you have seen just now this equation, and this equation is telling you, or you can observe here very easily, that is these all the terms are in a reciprocal. These terms are represented in their reciprocal. Okay, because whatever their charges entities are there, those are getting same in your denominator, numerator and the denominator, and that is why in your, sorry, I think I used wrong word. See, numerator and denominator. So in the numerator, the and denominator is having the value simply 1 by c is equals to 1 by ch plus 1 by cg. And what is this? These are nothing but the capacities. These are nothing but the differential capacities. And these are the reciprocal differential capacities. They may ask you, what are these? These are the, you should darken the correct one option. If they are asking you a MCQ question on this, then you should be able to answer them a correct option. And what is that? That is nothing but the, it is the reciprocal of differential capacity. And now here likewise this, we are done with the Stern model also. Tell me, are you clear? Yes or no? I'm waiting for your replies. And now
whatever all these models are there na, these models are having, these models are having simply one electrical double layer, then they are having inner stern model, or a Helmholtz layer is having their stationary layer and the diffused layer. The difference between them is zeta potential, and in if you go into the Koy-Chapman, then you have double diffused layer, and their combination can give you a stern layer. And now you can have your electrical double layer as electrical double layer. You can give its application to give information regarding many metals or organic compounds, um, information. Then you can have these your electrical double layers application into your interfaces. Means what? As I told you in my first class of Helmholtz model, that two walls are there, and don't go and just hit your head with those walls. See, why I told you this thing. See, ये जो कुछ भी दो वॉल्स आहे, दोन वेगवेगळ्या भिंती, आणि त्याच्यावरती जाऊन डोकं आपटू नका वगैरे सांगितलं होतं ना, बिकॉज just to make you laugh. But see, here I'm telling you two walls just for the sake of explanation of word interface meaning. Interface meaning. What is mean by interface, beta? Interface means the difference between the interface is the boundary line, is the boundary line between your two different faces between your two different sorry sorry, what is mean by काय ते interface? It is nothing but the boundary line between boundary line, or it is nothing but the जो डिफरेंट डिफरेंट दो फेसेस होते हैं उनके बीच में जो बाउंड्री लाइन होती है, या जो जहां पर आपके दो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस मिलते हैं, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। जैसे कि अब आप लोग मुझे पूछोगे कि मैम यहाँ पर क्या इंटरफेस होगा मैम? देखिए, कोलॉइड्स जो हम यूज कर रहे थे, वो कोलॉइड्स आर हेल्पिंग अस टू गिव यू दी इलेक्ट्रोड, और आपके जो सॉल्यूशन बनते हैं उनमें जो आयंस क्रिएट होते हैं, उनके बीच में जो कुछ भी मतलब रिलेशन बताना है, वो हमें हेल्प करते हैं ये कोलॉइड्स मॉलिक्यूल्स। अभी ये जो कुछ भी कोलॉइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये कोलॉइड मॉलिक्यूल्स आपके बहुत सारे ये सारे मतलब आयंस, मतलब योर सॉल्यूशन के बारे में जो कुछ भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है उसके बारे में बताने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, and this is all about your electrical double layer, and it's all the models. Now please tell me, are you guys clear with which I tried to tell you? Yes, no, something? I'm waiting for your replies. If yes, then please type yes in chat box. If no, then you can type no in chat box. Yes, okay, good. This is all about EDL and its models.